कुछ भूलों से हारा फिर से जीते देश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। वैज्ञानिकता विनय सभ्यता स्वभाव हो निस्वार्थी, स्वभाव हो निस्वार्थी। देशभक्ति में तेजस्वी हो फिर समाज यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। परंपरा की पुण्य चेतना उर में हम सब धारे, उर में हम सब धारे। बाल हृदय में उसे जगाकर जगे देश यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागो सारी दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ। बंधु भाव समता ममता से सबको गले लगाओ, सबको गले लगाओ। चलो विवेकानंद मार्ग पर शुभ संदेश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा। भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा।
वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुराः पाणिर्मधुराः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आदरणीय माता एवं पिता सस्नेह जय श्री कृष्ण। गीता परिवार द्वारा आयोजित अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की बाल एवं किशोरी विकास समिति
तथा विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ के सहयोग से आयोजित ई संस्कार वाटिका 2022 में आपका सहर्ष स्वागत है। आपके बच्चों को 21 जून से 30 जून की कालावधि में इस ई संस्कार वाटिका के प्रांगण में अवश्य भेजें। बच्चे ही भारत की उज्जवल भविष्य की आधारशिला है और उनका संस्कार सिंचन हम सबका दायित्व है। इसी दायित्व के निर्वाह हेतु गीता परिवार ने बड़े ही महत्वपूर्ण उपक्रमों का समावेश इस संस्कार वाटिका में किया है। सौभाग्यशाली होंगे वे बच्चे जो परम श्रद्धेय राष्ट्र संत स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन हनुमान जी की कथा सुनेंगे, जो बच्चों में शक्ति एवं भक्ति बढ़ाएगी, उनके मन, बुद्धि और शरीर को संस्कारित करेगी। हनुमान जी की शौर्य के साथ साथ संस्कार वर्धन करने वाली भारतीय शूरवीरों की कहानियां बच्चों को सुनाई जाएंगी, जो बड़ी ही प्रेरणास्पद एवं रोचक होंगी। कथा कथन वह माध्यम है जो बच्चों के मन पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालता है और उनके चरित्र निर्माण में सहायक होता है। गीता परिवार के पंच सूत्रों का एक आधार है भगवद गीता। भगवद गीता एक जादुई पुस्तक है। जीवन का जादू इस सत्र में भगवद गीता के श्लोकों का विवेचन बाल सुलभ तरीके से किया जाएगा तथा कुछ मजेदार मैजिक्स बच्चों को दिखाए जाएंगे। भगवद गीता में प्रतिपादित दैवी गुणों का संवर्धन बाल मनों में करना, यह गीता परिवार का उद्देश्य है। सहज शब्दों से एवं सटीक उदाहरणों द्वारा सफल जीवन के अनेक सूत्रों से बच्चे परिचित होंगे। हम प्रतिवर्ष बच्चों को स्तोत्र सिखाते हैं, वैसे ही इस वर्ष भी श्री कृष्णाष्टकम सिखाया जाएगा। संस्कृत भाषा का पारस्पर्श वाणी को संस्कारित बनाता है। इसके अभ्यास से उच्चारण शुद्ध होते हैं। आप देखेंगे कि केवल 10 दिनों में ही बच्चों को सभी श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे। हमारे बच्चों को भारत देश की गौरवशाली परंपरा का ज्ञान हो, इस उदात्त हेतु से विश्व गुरु भारत सत्र में प्रकाश डाला जाएगा। अद्भुत प्रेजेंटेशन द्वारा बताई गई ये कहानियां बच्चों के लिए बड़ी ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणास्पद रहेगी। योग सोपान। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आरंभ हो रहे इस उपक्रम में रोज 2 आसनों का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाएगा। बच्चे योगासन बड़े ही मनोयोग से करेंगे और आसानी से सीख भी जाएंगे। बच्चों को प्रत्यक्ष कृति करने में बड़ा आनंद आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मनोरंजक सत्र में क्राफ्ट एवं अन्य रोचक कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे फूलों का तोरण, फूलों की रंगोली, आरती की थाल सजाना, बॉक्सेस बनाना इत्यादि। इस सत्र से बच्चों की सृजनशीलता का विकास होगा। संस्कार वाटिका में प्रार्थना एवं गीत का समावेश भी है, जो बच्चों को भगवत भक्ति और देशभक्ति की राह पर चलने हेतु प्रेरित करेंगे। इस 10 दिनों में नित्य प्रश्न मंजूषा होगी एवं योगासन, क्राफ्ट, स्तोत्र की स्पर्धाएं भी होंगी। ढेर सारे पारितोषिक और सर्टिफिकेट्स बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। यह उपक्रम निःशुल्क है, बिल्कुल विनामूल्य, किंतु इससे प्राप्त होने वाले संस्कार अमूल्य है। आप तुरंत e-sanskar-vatika.com पर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाकर ई-संस्कार वाटिका का ऐप डाउनलोड करवाएं और इस उपक्रम में आपके बच्चे का सहभाग निश्चित करें। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरम्। जय श्री कृष्णा।
A very warm welcome to all the aspiring sadhaks to yet another interpretation session of the 9th chapter, Rajavidya Rajaguhya Yoga. This is a time extremely special to get enlightened with spiritual knowledge so essential. Let's delve deep into the words of supreme knowledge pronounced by the Supreme God Himself. For a devotional beginning, I now invite a very special sadhak, Gunjan ji from Akola, who's 9 years old, joined Geeta Parivar in 2021 and attained the title of Geeta Vrati in May 2022. Over to you. Jai Shri Krishna. Vasudeva Sutan Devam Kausachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Krishnam Vande Jagadgurum. Jai Shri Krishna. That was an excellent beginning to our session. Thank you, Gunjanji, for the beautiful recitation. With every session, the light of knowledge illuminates our path. Symbolizing the same, I invite Prashant Rasalji from Pune, who's a trainer for levels 1, 2, and 3 for the Deep Prajwalan. निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः. Thank you, Prashant ji, for a very beautiful Deep Prajwalan. When there's learning, doubts definitely accompany. Please note that the session is open for questions after explanation by the speaker. It's now time to welcome our speaker for the day, who's a Geeta Vrati and Geeta Praveena, leading our academic literature team. A disciple of Param Pujya Swamiji Shri Govinda Dev Giri Maharaj, she's grown up in the shadows of Geeta Parivar since her childhood. I take the honor to welcome respected Rupal Didi to enlighten us with her knowledge. We'll start with the prayer. सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. Jai Shri Krishna, everyone. Today again we are gathered here to discuss the meaning of 9th chapter, the Rajavidya Rajaguhya Yoga. We had seen 14 shlokas of this chapter last week, and we will continue 15 shlokas, and again today we will continue from the 14th shloka. We've seen that this chapter is very important in Bhagavad Gita and named as Rajavidya Rajaguhya Yoga. Rajavidya doesn't mean the knowledge of kings. This is not the knowledge of kings. Actually, the Rajavidya is the king of all knowledges.
whatever we are getting in this word and whatever we are seeing, knowledge is whatever new we are learning. That is jnana, that is knowledge. So whatever knowledge is there, the supreme knowledge among all the knowledges, that is Raja Vidya. So, yes, we had seen 15 shlokas, but today again we will continue from the 14th one, because I just randomly explained that shloka, but that is having very deep meaning. From the 14th shloka, Satatam kirtayanto mam yatantascha dridhavrataha namasyantascha mam bhaktya nityayukta upasate. Here, the Lord is explaining the different kinds of devotees, the different kinds of bhaktas. He is telling, always glorifying, satatam kirtayantaha. Kirtayantaha, kirti means glory. So satatam kirtayanto mam, who's always glorifying the Lord. Yatantascha dridhavrataha, yatantaha, who's always striving to get the Brahman. Yatantascha dridhavrataha, who's firm in vows. Dridhavrataha. If I started learning Geeta, I just thought that I will start learning Geeta and I will complete my 18 chapters. But after level 1, level 2, I leave that. After one chapter, I leave that. So that is not Dridha. Dridha means you are firm. Isthiramatir, we had seen this term also. This is also belonging to this thing. If we have started one thing, if we have thought that we will complete it, we will do it. We will not leave it in between. So that is Dridhavrataha. This time, 67 people have given exam, Geeta Vriti. All the complete 18 chapter memorization, not only just chanting or reciting the shlokas. They have learned 700 shlokas, and among 67, 60 examinees have passed the exam and got the upadhi of Geeta Vriti. They started in June 2020 and they completed their L4 in this month, April 2021, and given Geeta Vriti exam. They were all remembering the shlokas daily, not to forget. So they are Dridhavrataha, they have Sthiramatihi. They thought that they will complete their Geeta and they did it. They got the Geeta Vriti. So this was actually the most pleasurable, most privileged for them also, and all the festive moment for Geeta Parivar, that they have completed at level 4 and continue to now the Charcha Chintanika, Geeta Chintanika, if you have seen that on YouTube, that has started for them to just apply the Geeta in their lives, to study Geeta more, to learn the meaning of Geeta. So new thing has started in Geeta Parivar. When you will complete your level 2, level 3, level 4, that will also be for you. So Satatam Kirtayantaha, always glorifying and Kirtayantaha, Mam Yatantaha, who are always striving to get the Lord, the Parabrahman, for the Moksha. Yatantascha dridhavrataha, dridhavrataha form in vows. Namasyantascha mam bhaktya, namasyantaha, who is always prostrating me and laying down in front of me. Namasyantascha mam bhaktya, nitya yukta upasate, who is devoted to me. Nitya yukta, steadfast. Nitya Yukta Upasati, who is always worshipping me with the devotion. So here see this Kirtayanta word is having deep meaning. Kirtayanta is not just I am telling you the Lord Krishna is so beautiful, he is so pretty, he looks so nice, he speaks so nicely. This is not the Kirtayanta. This is not the Kirtayanta. Wherever I am seeing the Lord, wherever I am seeing anything in this world or anywhere, I'm just thinking what the Lord's glory is, how he has created the world very beautifully.
Anywhere I'm seeing anyone, I'm just thinking this is Lord's creation. In these words, if we know this fact that two people fingerprint doesn't match, never. So there are crores and lakhs of people are there, and even their fingerprint is not matching, their retina never matches. So how the Lord's creation is, how beautiful it is. So Satatam Kirtayantah. Gyan yogis everywhere just seeing the Lord. Bhagwan Namadev, if we see the Namadev Swami, he was once preparing chapatis. What happened? He was actually Gyan yogi. So he was thinking, I will just give it to Lord. I will eat and that will be bhog for Lord Krishna. So he was thinking this and he was preparing chapatis and he has put ghee also, clarified butter also with him. In between, what happened? One dog came and just taken that chapati and ran from there. Swami Ramdev started running after him, after that dog. Why? Not to take the chapati back. He ran after the dog, keep shouting, keep telling that please Bhagwan take some ghee with it. Why you are taking only chapati, take ghee with it, then eat. So everywhere he is seeing the Lord only. I am Brahman. If I am in, he got so happy that now, not today, I will give the bhog to Lord. Lord has come to me to take the bhog, to take the prasadam. He thought that not to, that dog is taking this chapati, I have prepared it for Lord. No, everywhere is Lord. Everywhere is Brahman. Even I eat it or the dog has taken. Everywhere is Brahman. Aham Brahmasmi Tattvamasi. If you are also that Tattva, I am also that Brahman. So if I eat or you eat, what does it matter? So he ran away. Take this ghritam, take this ghee with this chapati. Why you are going from here? I am here to give you this also. So this was Namadev. Satatam Kirtayanta is not saying that dog is different from me. So Satatam Kirtayanto. This is Jnana Yogi. And what is Bhakti Yogi? Bhakti Yogi everywhere seeing the Jnana Yogi is saying this, everything is Brahman. And Bhakti Yogi is saying everything is created from Brahman. Everywhere is Lord. This is not Brahman. This is created by the Brahman. So this is the difference. Bhakti Yogi always glorifying the Lord. How? What is your creation? How beautifully you have created everything. This world, every human being, all the creatures. So this is Bhakti Yogi. Jnana Yogi, Bhakti Yogi, Satatam Kirtayanta. There's one song for it. जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा. So जिसकी रचना, who has created this word, and this word is so beautiful. So how the Lord will be. जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा. So when we see the Swarup of Lord Krishna, how beautiful he is. We have one stotram, Adharam Madhuram, Madanam Madhuram, Nayanam Madhuram, Hasitam Madhuram, Hridayam Madhuram, Gamanam Madhuram, Madhuradhipate Rakhilam Madhuram, Madhuradhipate Akhilam Madhuram. Akhilam, and the word is also of that Madhuradhipate. So why this is not Madhura? This is also Madhura. Madhuradhipate Akhilam, Akhilam Madhuram. So this is Satatam Kirtayantaha Mam, Yatantaha, always striving to get that Lord.
And one kirtana is this, anywhere you are seeing and you are just glorifying the Lord. And another kirtan meaning is to sit and do the bhajan, to do the sankirtana, to do the nama sankirtana. So that sankirtana is different thing. You see, what is the difference between japa and kirtana? Let me clarify that. If you are sitting alone and doing Ramanama japa or anything, Sham Shankaraya Namaha or Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, anything. So that is japa if you are sitting alone. Or if you are sitting in a group and doing Śrīmad-Narayana Narayana Narayana Bhagavan Narayana Narayana Narayana. So if you are sitting alone and doing that, that is japa. And if you are sitting in a group and doing that, that is sankirtana. And what is the benefit in sankirtana you are not having in japa if you sit alone? I hope you must have felt that when we sit to do the dhyana, do the meditation, or to do the japa, our mind is distracting. We are doing Ram, 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 and from Ram, Ram, we just go in Krishna, Krishna, or we just started thinking of college, or we started thinking of friends, or we started thinking of some place, and we forgot then Ram Nama. We were doing Ram, Ram. And after 5-6 minutes, again, remember, oh my God, I was doing Ram Nama. So this is japa. In japa, we are sitting alone. So sometimes distraction happens with everyone. But in Sankirtana, we are sitting in a group. Even we are doing Śrīmad-Narayana, in between, we went somewhere, we lost. All the group keep doing Śrīmad-Narayana, and we again thought, oh my God, I should not think anything. And again we remember and again started Śrīmad-Narayana. This is the Sankirtana. You just do one experiment. You have one pot of coals and one coal is alone. And firing coals, not the black coal, firing coals, red in color. So in pot of coals, 25 coals are there and one is alone. We put that together, separate, but together. We are seeing after 10 to 15 minutes that alone coal is faded. Slowly fading up. And in that pot of coals, they're not fading, even they are more burning. Because they are in group. And if you put that coal again in that pot, what happens? Again that started burning. So it is better to do the kirtana, sankirtana in group, not sitting alone. I'm thinking I will go with them and doing Sankirtana. What they will think they are going on a spiritual mark. Oh my God, so old. What they are doing. So many things we just think. They will think we are old. We are saying the name of Lord or something. So that hesitation stops us to do the Sankirtana. Sometimes you see one coal is there in that pot that started burning in 5 minutes, but one coal was actually half coal, not complete. That was not became coal, that was half coal, and we put in that pot. That will take 35 to 40 minutes because that is half coal, not complete. That will take 40 minutes, but will be burning surely. Chaitanya Mahaprabhu, see what Chaitanya Mahaprabhu ji used to do. Whoever comes to him, even he is a devotee or not, he loves worshipping or not, he just say, you just do Sankirtana, you do Ram Nam or Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So whoever is coming to him, he just say you do Sankirtana. You do this Kirtana, Hare Rama. Wherever you are going, you just do this Kirtana. So, who doesn't even love to worship, after some times he start loving that Kirtan.
So that person is that coal who's taking 40 minutes to burn because that is in that pot. So Sankirtana, Satatam Kirtayantahamam. Wherever Chaitanya Mahaprabhuji is, anytime you see his picture, he is in this pose. Because every time he is doing Sankirtana, he is mantra mugdha, he is magna in Krishna Bhakti. Actually, the Kirtana has started from Naradji, and Naradji is not the person. Naradji is actually post. Narad is post. So many people, as Indra is the post, Varuna is the post, and these are the post. One person is not there named Varuna. Varuna is post, Indra is post. That's why when Vishwamitra has done 99 yagyas and about to finish the 101, what the Indra does, his Singhasan was shivering, started shivering, because Vishwamitra will get that Singhasana, because that Singhasana needs that the amount of punyas. And after completing that hundreds of yagya, Vishwamitra get that amount and he will replace that previous Indra, and Vishwamitra will become the Indra. So Indra sent Urvashi, and all this story we know. So this is post. Narad is also post. Naradji was the founder, was the starting point of Kirtana. Wherever he is going, Narayana, Narayana. He is always doing Narayan, Narayan. Wherever the Narayan sound is there, everyone knows Naradji has come. Oh my God. So that is post, Naradji. And in this Adhunik Kala, Chaitanya Mahaprabhuji was the main person who has spread this Kirtana all over the world. Chaitanya Mahaprabhu. So Satatam Kirtayantamam. In Rishikesh, if we see, if someone touches anyone's feet, Charana Sparsha. So in Rishikesh, Geeta Bhavan, no one is giving Ashirvad, Khush raho, Sada Sukhi raho, or Dudho naho, Putu. Not like this. They are doing Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, or any Kirtana. They will do just Kirtana. Because when we give Ashirvada to anyone, we give wishes or blessings to anyone, we are making our punyas lesser. We are spending our punyas. So Geeta Bhavan people, the Rishikesh people thinks that they don't have that amount of punyas that they can give the blessings to anyone. If I don't have money in my purse, how I can give you 500? If I have, then I can give you 100 or 200 or 500, take it. If I don't have that much of amount, if I have 2 rupees, I want to give you 10 rupees, can I give? No, we cannot. So Rishikesh people thinking is they don't have that amount in their purse. How they can give? So whenever anyone do the pranama, they just do the kirtana. Kirtana for our kalyana also, for their welfare also. So win-win, always. So always we can give, we are giving Ashirvad. Actually, that is famous in this culture, famous in this yuga. If we are not giving, you are doing kirtana, some people are not familiar even. What they are doing, I am teaching in their feet and they are hearing, okay, Ram, 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 Ram. So, okay, fine. But I'm just telling you the thinking of people. So, Satatam Kirtayanto Mam Yatantascha Dridhavrataha Yatantaha Dridhavrataha. If they have taken any vow, we will complete that. We are not going to leave Geeta in between. We will complete it in chapters. Then we will again start getting the meaning of Geeta. We will increase our swadhyaya for Geeta. We are seeing the 20 shlokas in 1 hour. Then we will see 1 shloka in 1 hour. Then you will see 1 word in 1 hour. So that is to increase your swadhyaya.
If I am not that knowledgeable and whatever I am listening from Param Pujya Swamiji and read in my course Advaita Vedanta, whatever, I am telling you that only. And before telling you, I am preparing myself from where to get what material to serve you. From so many books, Sadhak Sanjeevani and so many different Geetas, Shankar Bhashya. So I'm referring all the books. What is being given there? So I am not that knowledgeable. But if you see Swami Param Pujya Swamiji Maharaj, the founder of Geeta Parivar, he is, or even Ashu Bhaiya or Sanjay Bhaiya or anyone. These people, if they are speaking on one word, they can speak for several hours. 2-3 hours, they will just speak on one word. I have explained this Kirtayanta in 20 minutes. They will explain this Kirtayanta in 1 hour. And still that will not be finished. So that is Svadhyaya. How much you have learned. There is Ananta Gyan in this Brahmanda. Nothing is created. We are always thinking, I have got this idea. That idea is not yours. You have not got this idea. That idea is already in this universe. We just have got in our mind. There is nothing new. That idea is still existing everywhere. Satatang kirtanda yatantasya dridhavrataha namasyantasya mam bhaktya. Namasyantaha, not just namaskara or doing pranam to anyone. Namasyantasya, whenever I am seeing this creation, all the creatures created by the Lord, I am doing namaskara to Lord for your creation. How you have created everything. Every time I am just proceeding in front of Him for His creation. Namastyanta shamam bhaktya nitya yukta upasate. Every time I am worshipping the Lord with the devotion. Whatever I am doing this Vivechana, so I am thinking. I am not actually thinking, I am just telling what should be. So, if I am doing Vivechana, if I am preparing food, or even if I am going somewhere, even if I am giving exam, even if I am teaching, I am a chartered accountant, so I am doing something, my work, I am businessman, I am doing my business. Anything we are doing, I am doing it for Lord. I am devoted to Lord, and this word is of Lord. So whatever I am doing for this word, that is for Lord. Nitya yukta upasana. Nitya yukta, there is not just yukta. And when I am worshipping, then I will remember the Lord. After that, I will forget the Lord. I am doing my business, I don't have the Lord in my mind. I don't have Bhagavan Shri Krishna in my mind. So that is not nitya yukta. Nitya, always. Nitya yukta upasate. So this is 14th shloka. Now in 15th shloka, we will see the different upasakas. Jnana yagyena chapyanye yajanto mam upasate ekatvena prathatvena bahudha vishwato mukham. So here Bhagavan has described the other devotees. Jnana yogis, jnana yagyena chapi anye yajantaha mam upasate ekatvena. This is a different category. First line is having one category and second line is having another category. First line is of nirguna nirakara. Okay, the unmanifest Lord worshipping, and the ekatvena pratatvena buddha vishwato mukham is the saguna sakara bhakti, the manifest Lord worshipping. Okay, so jnana yagyena chapyanye yajanto mam upasate. Here Bhagavan is telling other worship me by adoring exclusively through the sacrifice of knowledge. Jnana yagena, the sacrifice of knowledge. Ekatvena prathatvena. Jnana yogis always think they are the Brahmans. The difference between Jnana yogi and Bhakti yogi. Jnana yogi is the Brahman, and Bhakti yogi is separating the Brahman and the Prakriti.
he is doing the worshipping of Saguna Sakara Bhakta, Bhagwan. So Bhagwan is superior than me. He knows that I am, and the Brahman is one. But he thinks that he is superior than me. The Bhagwan is superior than me. So Bhakti Yogi. Yana yajnena chapyanye yajanto mam upasate. See, just take one example. If we are going in one showroom of candle, there are thousands of candles. So one girl went there with her father, and she is asking, I want this doll, I want this pet, I want this toy, I want this dog, so many things. Everything is made up of the wax. Everything is made up of wax. Candle showroom. So doll candle, the shape of doll. One another candle shape of dog. One another candle shape of cat. So many creations are there. But all creations are made up of wax. So girl is asking her father to give me this doll, to buy this dog for me, to buy this cat for me. But the father is the businessman of candles. He has the business of candles. So he tells her, you are seeing that doll and you are seeing that dog or cat. I am seeing how much wax is being used there. How costly it will be. So the daughter is seeing the doll and cat, all the creations. But the father, what the father is seeing, everything is made up of wax, and he is thinking of money. So that is Tattvadrashti. He is not seeing the doll or cat or dog. He is seeing the wax. Wax is that Brahman. And all the doll, dog, and cat, all the creatures are we, all of us. So that candle show. Jnana again, who is Jnani Yogi, seeing everywhere the Brahman is. But the Bhakti Yogi is the daughter, seeing, I want this doll, I want this dog, I want this cat. So she is seeing separately, not the Tattvadrashti. Jnana yajnena chapyanye yajanto mam upasate. Upasate, just worshipping. Ekatvena prathatvena bahudha vishvato mukham. And other sadhakas, other worshippers are worshipping me. The Virat Swarupa, they are thinking that this sansar is my Virat Swarupa. Brahman is Nirgun Nirakar. He cannot have so many forms. So, the Bhakti Yogis, the Ekat Prithatvena Bahuda Vishwato Mukham, they are thinking that this word is my Swarupa, my Virat Swarupa. So Ekatvena Prithatvena Bahuda Vishwato Mukham. Our body or everything, whatever we are saying, is just made up of 5 elements. So Jnana Yogis know this. Kshitijal Pavaka Gagana Samira Pancharachita Ati Adhama Sarira. So Kshitijal Pavaka Gagana Samira, these 5 elements. Our body is made up of these 5 elements. Pancharachita Ati Adhama Sarira. Now the 16th shloka. From here, Bhagwan will start explaining how the divergent and the conflicting forms of worship. There is the same Lord. Jnana Yogi, Bhakti Yogi, Karma Yogi, everyone is getting the same form of Lord. So Lord is giving the answer of this question from the 16th shloka to 19th shloka. Aham kraturaham yagyas sadhaham aushadham mantro hamahame aham agniraham hutam pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkara
ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन. So Bhagavan is telling in these verses how everyone, whether he is Gyan Yogi, whether he is Karma Yogi, whether he is Bhakti Yogi, will get the same Lord, same Brahman. The goal will be same. So from here, Aham Kraturaham Yajyaha, Aham Kratuhu. See the difference between Kratu and Yajya. Sometimes it is used as synonyms, but this is not a synonym. This is different, a slight difference between Kratuhu and Yajyaha. Kratu is the Vedic rituals, whatever is being told in Vedas, whatever rituals are told, the Nitya Karmas, Naimitya Karmas, everything is Kratuhu. And the Yajya is the sacrifice, where we are offering something by indicating to the Devata. Okay, so this is Aham Kratuhu and Yajya. Bhagavan is telling everything is just Lord. From this shloka 9.16, from the 9th chapter 16 shloka, Bhagavan has started telling his vibhutis. In 10th chapter, when in level 4, you will see all other vibhutis. You will have this 10th chapter in level 4. In the 10th chapter is having the name of Vibhuti Yoga. So in 10th chapter, Bhagavan has elaborated describes all the vibhutis of him. Aksharanamakarus vidonda samasikasya cha adityanamaham vishnu jyotisham raviranchuman uchchai shravanamaswanam varna sankarakarak. So many vibhutis. What are the vibhutis? So whatever is there in the word, among those, what is best? That is my vibhuti. Pandavanam Dhananjayaha. In Pandavas, my vibhuti is Dhananjay, because Dhananjay is best. Aksharanam Akarosmi. In all the alphabets, the Akara is best. So Akara is my vibhuti. Ashwatha Sarvrikshanam. Among all the trees, my vibhuti is Ashwath Vriksha. In 15th chapter also, Bhagavan has used Ashwatthamenam Suvirodhamulam Asanga Shastrena Dridhen Ashwath Vriksha. So Ashwath Vriksha is my vibhuti. So he will explain all the vibhutis in 10th chapter, but from the 9th chapter 16th shloka, he has started explaining his vibhutis. Starting point is this, just to tell you. Aham kraturaham yajyaha sadhahamaham aushadham aham kratuhu. Aham yajyaha, I am the sacrifice. I am the swadha. Swadha is the offering to the ancestors. That is swadha. Swadha hamaham aushadham. Swadha aham. Aham aushadham. I am the herb for all the. I am the medicinal herbs for all the plants. So swadhaham aham aushadham. Mantroham. I am the sacred syllables. Mantroham. What? When we are doing the sacrifice, we have some things like swadha. We have swadha to offer the devtas. We have mantras also. So mantra also, I am the mantra only. Mantro aham. Aham eva ajyam. The ghritam, the ghee, the clarified butter is also me. The drava padhartha. Mantro hama aham eva ajyam. Aham agnihi. The fire is also me. Aham agnihi. Aham hutam. I am the offering. So what? Everything is me. Bhagavan is telling. In next verse, Pita hamasya jagato mata dhata pita maha vedyam pavitram omkara riksamaya jurevacha.
He's telling Pita Ahamasya Jagato. I am the father of this world. Pita Aham Asya Jagataha. Asya Jagataha Pita Aham. Like this Anvaya is. So Aham Asya Jagataha Pita. I am the father of this world. Mata Dhata Pitamaha. Mata, I am the mother also. Dhata, I sustain this world. Pita Hamasya Jagato Mata Dhata, the dispenser of all the fruits of all actions, the Dhata, who seeing our karmas and what the fruit will be all of all the actions. So Dhata, Pitamaha, I am the grandfather. As the Bhish Pitama in Hastinapura, we all have the Lord Krishna as our Pitamaha. I am mother, I am father, I am your grandfather also. Because we love our grandparents so much. Bhagavan is telling, okay, you are not loving your mother, you are not loving your father. Okay, you are loving your grandparents. I am your grandparents also. So Pitamaha, Vedyam Pavitra. Vedyam means we should know. Vedyam, the thing to be known. Vedyam. Pavitram Omkara. Pavitram Omkara. I am the purifier. Pavitram Omkara. Omkara we all know. The Omkara is name of Lord. Vedyam Pavitram Omkara. Riksamaya Jurevacha. There are three Vedas. Rig Veda, Rig, Sama Veda, and Yajurevacha. Yajuhu Evacha. Yajurveda. Why only three Vedas are here, not the Atharva Veda has been explained? Because the Atharva Veda is not the Veda. Actually, the Veda is only one. Veda Vyasa Bhagavan has separated this according to the topic, according to the subject is being discussed in all the Vedas. So Rig Veda, Yajurveda, Samaveda. Samaveda is nothing, just the singing of all the mantras. That is Samaveda. And Atharva Veda, how to create, how to prepare the machines, all the machines. That is Atharva Veda. So many things, how to prepare this, how to prepare this, how to prepare this. That has already been taken in all the Vedas, but at different places. That's why Atharva Veda is at so many places. You will see Atharva Veda is not considered as Veda. But we have four Vedas. Atharva Veda is having all the content which is already described in all the Vedas. So Atharva Veda is not considered here. So Vedyam Pavitram Omkara Riksamaya Jurevacha. Gatir Bharta Prabhu Sakshi. Gatir Bharta. The goal. Gatihi. Gatihi means the goal. Gahana Karmano Gatihi. This is so deep to understand the goal of this karmana, all the karmas goal. Gahana karmano gati in 4th chapter. Gatihi bharta, the supporter. Bharta means sometimes bharta word is also used for the husband because he is always supporter of. So gatir bharta, Prabhu, the Lord, Sakshi, the witness, whatever we are doing. There is one witness for all the karmas. If you are doing something alone, you know there is one third eye. Even there is no camera, but there is third eye watching all of us. And writing in the book of karmas, papa punyas. Someone is there who's counting all the punya and papas. So Sakshi, that's why Bhagavan used here. Prabhu Sakshi, Nivasaha, Sharanam, where we are abiding, the Nivasaha, Sharanam, the shelter for us. Sharanam Suhrat, the friend. Nivasa Sharanam Suhrat, Prabhava Pralaya Sthanam, Prabhavaha, Pralaya, the origin. Prabhava means the origin. Pralaya, the dissolution. Sthanam, Pralaya Sthanam, the dissolution, the foundation, Sthanam, Nidhanam. After the Pralaya, I have already explained this sequence from the Brahman,
Akash is coming, and from the Akash, Vayu, from Vayu, the Agni, from Agni, the Jala, Apaha, and from the Apaha, the Prithvi. And when the Pralaya is happening, the Prithvi is going into the fire. Jala, sorry, and the Jala is going into the fire, and fire is going into the Vayu, and Vayu is going into the Akasha, and Akasha is going into the Brahman. So where the Akash is going, that point where it is staying until the next creation of this universe happening, until the next universe is coming, the another universe is being created by the Brahman, where it is staying, that is Nidhanam, that point where everything is staying after the Pralaya. Nidhanam, Bijam, that Bija, that where it is staying. And why it is Bijam? Because when everything will be created, again the same thing, from the Brahman Akash will come. That's why that is Bijam. If we are putting some Bija or some seeds, we will get the tree, we will get the plant. That's why it is Bijam. Nidhanam Bijam Avyayam. Why Avyayam? Because after thousands of Pralaya and creation, still the Brahman will be there. So Avyayam. Nidhanam Bijam Avyayam, imperishable. Satchidananda Rupam, Sat. So first Lakshana, first quality of Brahman is Sat. And Sat is, what is Sat? Everywhere existing, which is exist everywhere, every time, even after the Pralaya, even after the creation. So that is Avyayam. Now in next verse, Tapamyaham varsham nigrihnamyutsrajami cha amritan chaiva mrityuscha sadasachaham Arjuna. O Arjuna, for the welfare of the world, tapami aham varsham nigrihnami utsrajami cha amritan chaiva mrityuhu cha sadasat sad asat cha aham Arjuna. This is the vigraha here. So tapamyaham, for the welfare of the world, I as the sun, I being the sun, give heat. Tapami aham varsham nigrihnami utsrajami. I give heat. Why I give heat? Why I spread my sunshine, being sun? For the welfare of the people. If there is no sun, can we imagine this world? No, we cannot. So tapami aham varsham, Arjuna, for the welfare of the world, I being the sun, give the heat. Tapami aham varsham nigrihnami utsrajami cha. Nigrihnami, I hold back, I hold the water, the sunshine of the sun, taking the water from ocean and holding in the form of clouds. So hold, nigrihnami, I hold back and send forth the rain. Nigrihnami utsrajami cha, I am being the sun, I am the cloud, and again the rains are also me. Nigrihnami utsrajami cha amritam chaiva mrityuscha. Amritam means amritam chaiva mrityuscha. Mrityu is death, and who is never going to die. That is amritam, who will always be there. Amritam chaiva, immortal. Amritam chaiva mrityuscha, I am immortal, I am the death, I am the being and non-being also. Sadasachaham Arjuna. I am the being also, Sad also, and I am the Asad also. Here in Śrīmad-Bhagavatam, why Bhagwan here told the Sad and Asad also me? So in Śrīmad-Bhagavatam, Bhagwan told one shloka, Ahameva samayevagre nanyadyat sadasatparam paschadaham yadattet yo vashishyet somyaham. Sosmyaham. So aham eva sameva agre. I am agre. Agre means before.
Before this word is created, I am there. Ahameva samagrena nanyad yad sad sat param. Nanyat, there is nothing else other than me, the sat or asat. Paschad aham yadi taccha. Paschad aham, after this pralaya, then nothing is there after. Paschad means after. Paschad aham, I am only later also, when nothing is there. Paschad aham yadi taccha. Yadi taccha, whatever is there. Yad etat, whatever. Yadi taccha yo vashishyet. So smaham, whatever is left. So smaham, that is also me. So I am the Sat, I am before this universe, I am after this universe, and after this universe also, what is left? Yadetaccha avashishyate, yo vashishyet, whatever is left, that is also me. Yo vashishyet, so smyaham, that is also me. So sadetaccha. Satyasachaham Arjuna. 19 shlokas to. Now, in 28th shloka, the ways of fools and the devotees, Bhagavan will explain the difference. And next two verses, the Lord is describing the ways of enjoyment of seekers who is worshipping the Lord, how he enjoys the things and how he comes back to this word again. Traividyamam Somapav Puta Papa Yagyairištva Swargatim Prarthayante Te Punyamasadya Surendra Lokam Ashnanti Divyan Divideva Bhogan. Bhagavan is saying Traividya. Again, Bhagavan is referring to the three Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, and Samaveda. Traividya Mam Somapav Puta Papa, the knowers of the three Vedas. Traividya Mam Somapav Puta, the knowers of all the three Vedas. The drinker Somapaha. Somapav means the drinker of the Somarasa. What is Soma? Soma is a plant, which is said that in the bright half of lunar month, we know the lunar month, and there is I forgot, I will tell you. See, so as the Purnama is coming, the dark moon is coming, it will be complete. One leaf will be there. So as the every day one leaf is coming on that plant. So this is Soma. There is one plant having one leaf daily. In Shukla Paksha, we will get one leaf day by day. One. So on the day, when the full moon day, there are 15 leaves. And on the dark moon, there are no leaves. So it is working as it is giving leaves and falling the leaves according to the Chandrakalas. Okay, so Shukla Paksha and Krishna Paksha, full moon and the dark moon. So this is Soma. Soma is not the drinks and beers which is just being described, and so many people are using it. Is also said in your scriptures, in the Hindu scriptures. This is actually not Hindu scripture, the Geeta or all these scriptures. So they're telling, they're just misusing it, that Soma Rasa is the beer or the wines. So this is not Soma Rasa. Soma Rasa is the juice of that plant, which is giving one leaf and then falling all the leaves on dark moon day. So who in previous days, actually the yagyas, the sacrifices are 15 days or 30 days like this. So how, and the rule is they cannot eat anything between the sacrifice. They cannot drink anything between the sacrifice. So 15 days or 30 days or 2 months, whatever it is, they cannot eat anything, they cannot drink anything. So what they do? If they drink the Somarasa, they don't need to eat anything. Somarasa is giving that much energy to them. So that is Somarasa. So they don't need to eat anything or they don't need to drink anything. Actually, they don't feel to eat or drink. So that is Somarasa. Taividyamam Somapav Puta Papa
Yajyairištva, worshipping me by the sacrifices. Yajyaihi ištva. Yajyaihi. Ištva yajyaihi. Swargatim prarthante. Who is giving the sacrifices? Who is doing the yagyas, havans? So what he will get? Swargatim prarthayante. They are asking for the swarga. They are worshipping me by the sacrifices and they pray for the way to heaven. So yajyaihi ištva swargatim prarthayan. Te punyam asadhya surendra lokam. Te punyam asadhya sura indra. Surendra lokam. Sura means all the devatas and Surendra is Indra loka, the Swarga loka. Surendra lokam. Ashnanti divyan dividevo bhogan. They pray for the heaven with the sacrifices, the worshipping me by the sacrifices, and they reach to the holy word of the Lord. Surendra lokam. The Lord of all the gods. So that is Indra. Surendra lokam. And Ashnanti. Ashnanti means they enjoy. Ashnanti divyan divideva bhogan. They enjoy in the heaven and they enjoy all the divine pleasures. As we are in 5-star hotel or in the 7-star hotel with our money, we are spending the money and we spend our money and we enjoy whatever is there in 5-star hotel and 7-star hotel. Same, we are having the punyas, the amount of punyas. We are going in Swargaloka and enjoying all the heaven, whatever is in the heaven. We are enjoying everything. We are enjoying all the objects. So, Ashnanti Vidyan Divideva Bhogan. Again in the next verse, Tetam Bhuktva Swargalokam Vishalam Kshine Punye Martyalokam Vishanti Evantrೈ Dharmamanuprapanna Gata Gatam Kama Kama Labhante. When they have already enjoyed the Vishalam Swargalokam, the vast heaven, Tetam Bhuktva. Bhuktva means the tva pratyay is used for when you have done one kriya, one action, and going towards the another action. So bhuktva means you have already enjoyed that. Te tam bhuktva. Tam means that. Those the Vishalam, the vast heaven, you have already enjoyed bhuktva. Now what will happen? When you have spent all the money, you need to come back from that 5-star hotel. Because money is finished. What will happen? You cannot stay there anymore. Even you ask them, I have stayed here for 10 days. Let me be here for one more day. No. Your money is finished, sir. I cannot ask you to stay here. You need to leave. So when our punyas are finished, we need to come back again on this ocean of birth and death, the Mrityu Loka. Yes. Tetam bhuktva swargalokam kshine. Kshine means when it is finished. The punye. Kshine punye. When the punyas are finished, martyalokam vishanti. They again fall down on this Mrityu Loka, on this world. Yes. Enter to the world of mortals when their merit is exhausted, when you have finished your punya. Kshine punya martilok. Evantrೈ dharmamanuprapanna. And they are abiding in 3 Vedas and desiring. Even Trai Dharmam. Trai Dharma means you have whatever is being said in Trai Dharma. What is being said, the Dharma in all the 3 Vedas. Anuprapanna, when you are following. And design Gata Gatam Kama Kama Labhante, desiring the desires, the objects, and attain to the state of going and returning. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani jathare shayanam. So you will again come back in this cycle of birth and death. Gatagatam kama kama labhante. What they gatagatam, what they labhante, what they get, what they attain. Gatagatam, they again attain this going and returning circle. Now in 22nd shloka, Bhagavan is saying, what about those who totally depends on you?
So the position is being explained in this next verse. This is so beautiful. Ananyāścintayanto mam ye janāh paryupāsate teshān nityabhyuktānām yogakshemam vahamyaham. Yogakshemam vahamyaham, we must have heard the LIC, Dheya Vakya, the logo of LIC, Yogakshemam vahamyaham. It is in like this. So LIC is LIC is having Yogakshemam after death. But Lord is telling, no, not after death. I will do your Yogakshema when you are alive also. So this is Lord. Yogakshemam. What is Yogakshemam? Yoga is what you have earned, what you are getting. That is yoga. And Kshema means to save that, to keep that with you is Kshema. So Bhagavan is telling yoga means the provision of the means required, what you are getting, and Kshema means the security. So that is also being done by the Lord. Yoga Kshemam Vahami Aham. I will see your Yoga Kshema, who all are depending totally on the Lord. When Draupadi Chirharan, we all have seen that. Draupadi seen all the Bhishpitama, Dronacharya, everyone, but they just did nothing. Then she started looking at her husbands, all the Pancha Pandavas. They were also helpless. They couldn't do anything. And then she thought, I am also Kshatrani. I also have the power. I will hold my sari. I will not let them take it off. She tightly held it from her teeth and from hands, so tightly. And when she felt that I would not be able to hold this from my power, she just Shri Krishna Arpanamastu and started Shri Krishna, Shri Krishna. When she got totally dependent on the Lord, then Lord Krishna came. She even started asking, because Draupadi and Shri Krishna ji are both her friends. When she started asking Lord Krishna, why you didn't come before? Why you are waiting? So Lord Krishna said, you are believing on the Bhishpitama, Dronacharya, then your husband, and then yourself. When you are dependent on others, when you are dependent on yourself, how I can come there? I will come when you are totally dependent on me. If you have 10 rupees, why I will give you 5 rupees to go and buy the biscuit and toffee or chocolate, whatever. If you don't have money, then I will give you money. So when you left all the hopes and you started remembering me, then I came and saved you. Here, Yoga Kshemam Vahamyam, but Yoga Kshemam, not I am doing everything, I am doing everything for samsara and enjoying all the fruits of all the action, and I am thinking Lord should do my Yoga Kshemam. So that will not happen, that is not gonna happen. So Ananyāścintayanto mam, to those men, Ananyaha, Ananya Yoga, again remember the 12th chapter. Ananyenaiva yogena mandhyayanta upasate. Ananya Yoga. Bhagavan has taken everyone, the Christians also, the Islamic people also, everyone here. Ananya Yoga. If you are worshipping the Lord just one, everywhere the Lord is also one, all the Lord just having different names. The God is also that Brahman only, and everyone is just Brahman. So Ananya Yoga, everywhere is just Brahman and everything is just Brahman. Ananyaha Chintayantaha mam, who worship me alone. Ananyaha Chintayantaha mam, ye janaha paryupasate, thinking of none but me. Chintayantaha means they are just thinking of me. And ye janaha paryupasate, they just worship me. Ananyāścintayanto mam ye janāh paryupasate teshan nitya abhiyuktānam, teshan nitya abhiyuktānam, who are ever devout, who are just dependent on me, nitya abhiyuktānam.
They are abhiyukta means they are always connected. Abhi is upsarga prefix that is used for all the ways. Abhi. So with everything, they are nitya abhiyuktanam. They are always connected with me. Yukta means they are connected. Tesham nitya abhiyuktanam yogakshemam vahamyam. They are always connected me. They are just dependent on me. I see their yogakshema. Bhagavan told in 22nd shloka, now you cannot complain the Lord why you are not thinking of me, why you are not listening me, because you are not abhyukta, you are not nitya yukta with the Lord. So if we are just dependent on the Lord, then Lord will think of us. Then Lord will start thinking for ourselves. Then Lord will do the yogakshemam vahamyam. Then he will see our yogakshema. So we will just see 22 shlokas. From 23rd shloka, the different topic is being discussed. So we will see in next session. Now I would like to invite Arya ji and to go for the first do this. We will do the Sankirtana. 2 minutes Sankirtana. Sit calmly, straight, and with shunya mind. Just think of Lord. Ananya Shindayanta. Be like that. Hari Sharanam, 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 Hari Sharanam. Rupal Krishna Bhagavan ki jai. Let's start the question answer session. Thank you, Rupal Didi, for the selfless sharing of knowledge with an amazing insight into the significance of Sankirtana. We'll now move on to the question answer session. In case you have a question, please raise your hand and switch on your videos. Yes, Pragati, First have- please ask. Pragati, can you unmute yourself? Jai Shri Krishna, ma'am. Yes, Jai Shri Krishna. Ma'am, my question is, just we say give more attention to the Geeta in Ramayana. No, we don't say that. Actually, Because- what happens, we say Gita is having the gist of gist. The gist of Vedas are the Upanishads, and the gist of Upanishads is Gita. So when we read Gita, we know all the scriptures gist. We have known all the dharma, what we should do, what we should not do. That's why we more focus on Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita practically is being explained in Ramcharitmanas and Ramayana. So that is connected, but Ramcharitmanas is not having everything. Gita is having everything, all the concepts of our philosophy. That's why we more focus on Bhagavad Gita, and we have the announcement by Lord Krishna also in 18th chapter. Whoever will read Gita, that will be my most favorite. So we are so selfish that we have started this. We are studying, we are teaching because of that announcement by Lord. Okay? Thank you. Yes. Yes, Gopal ji. आपने अभी लास्ट में ये कहा था कीर्तन करते समय हरे कि परमात्मा का ध्यान करें शून्य से होकर। तो परमात्मा को जो हम ध्यान करते हैं तो उनकी शक्ल करें या क्या करें, वो चीज समझ में नहीं आई। क्या ध्यान करूं मैं? ये प्रश्न फंसता है, हमारे शास्त्रों में भी आता है, लेकिन वही बात हो गई कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की। तो 12वें अध्याय में भगवान ने कहा
जब अर्जुन ने पूछा कि के योग वित्तमाह, तो भगवान ने कहा कि मयि आवेश मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परे उपेता ते में युक्त तमामताः। जो सगुण रूप उपासना करते हैं वही मेरे ज्यादा प्रिय होते हैं, वही बेटर नोअर ऑफ द योगा, वही ज्यादा अच्छे से योग को जानते हैं। आशु भी हमारे बीच में आ गए, तो आप एक बार अपना प्रश्न रिपीट करेंगे तो आशु भैया का लाभ हमें मिलेगा। जी, जय श्री कृष्ण। आशु भैया स्वागत करते हैं आपका। आशु भैया जी, जय श्री कृष्ण। मैं प्रश्न पूछ रहा था, मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्टरी आंसर चाहिए। मैडम ने बताया, दीदी ने, कि लास्ट में जब हम भजन कर रहे थे तो शून्य हो गए, परमात्मा का ध्यान करें। तो परमात्मा का ध्यान करते समय मैं किस आकृति का ध्यान करूं, ये मेरे समझ में नहीं आया, थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरी किस आकृति के प्रति अधिक प्रेम है, मैं किस आकृति के प्रति अधिक आकृष्ट हूं, ये उस पर निर्भर करता है। जिसको परमात्मा के सगुण साकार के विग्रह अच्छे लगते हैं तो मुझे राम जी अच्छे लगते हैं तो राम जी, कृष्ण अच्छे लगते हैं तो कृष्ण, मुझे शिव जी अच्छे लगते हैं तो शिव जी, आदि रूप ले सकते हैं। मुझे परमात्मा का प्रकाश स्वरूप अच्छा लगता है तो मैं प्रकाश का ध्यान कर सकता हूँ। मुझे परमात्मा का कोई अलग ही, कोई ओम पर ध्यान करता है, कोई चित्र पर ध्यान करता है, कोई कहता है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आनापान अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान करूंगा, तो उस पर भी कर सकते हैं। ये सारी बातें व्यक्तिगत रुचि से हमारी जो धारणा है वो कहाँ अधिक टिक सकती है वो महत्वपूर्ण है। सारी बात ऐसी है कि गीता के कृष्ण तो इस मामले में विलक्षण है। मैं किस मार्ग से जाऊं वो उसका आग्रह करते ही नहीं। मैं किसी भी मार्ग से जाऊं इस बात से अंतर पड़ता नहीं, मुझे पहुंचना कहाँ है वो दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। और जब मुझे पता है कि मुझे उस परमात्मा तक पहुंचना है, फिर मैं किस मार्ग से आता हूँ महत्वपूर्ण नहीं, ध्यान से परमात्मा से जुड़ना नहीं है। वास्तव में आपको बतलाता हूँ, हम तो जुड़े हुए ही, संसार से हटाने, अपने को हटाना है। ध्यान करने का तात्पर्य परमात्मा से जुड़ना नहीं है, ये उसकी कहने वाली या एक्सप्रेशन करने की बात है। वास्तव में परमात्मा कोई अप्राप्त थोड़ी है, वो कहाँ नहीं है जिसको हम जाकर वहां प्राप्त कर लेंगे। वो तो हर वक्त ही प्राप्त है, हर स्थान पर ही है। तो हम कोई अप्राप्त चीज होगी तो उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जैसे दर्पण पे मैल आ जाए, कोई मिरर पे गंदगी आ जाए, तो हम उसके सामने जाके खड़े होंगे तो वी कैन नॉट सी अवर रिफ्लेक्शन, हमको अपना प्रतिबिंब दिखता नहीं। प्रतिबिंब है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो वही है, बट वी कैन नॉट फील इट, वी कैन नॉट सी इट बिकॉज देयर इज अ डस्ट। अभी उस डस्ट को रिमूव कर दिया, उस डस्ट को क्लियर कर दिया, तो वी कैन फील दैट रिफ्लेक्शन, हम इमीडिएटली उसको देख लेते हैं। वो रिफ्लेक्शन वहां पहले भी था, मैल के कारण दिखता नहीं था, मैल के जाते ही दिखने लग गया। ऐसे ही परमात्मा हमसे जुड़े हुए हैं, मुझे किस माध्यम से उनसे जुड़ने से उनकी अनुभूति हो जाएगी वो महत्वपूर्ण है। तो मेरा मन संसार से हटेगा कैसे वो महत्वपूर्ण है। जुड़ा हुआ तो वही कनेक्शन वहां पे है, जो बीच में ये डिसकनेक्शन की मैल है ये हटानी है। तो वो मुझे जहां से प्रियता होती है, जो मेरे लिए सुगम है, ये सबके लिए व्यक्तिगत बात है, इसका स्वातंत्र है, जिसको जो अच्छा लगता है वो। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सपोज जो चित्रकारों ने चित्र बना के भगवान कृष्ण का स्वरूप दिखाया है, चित्रकारों ने बनाए हैं, ये थोड़ी अनाड़ी मान्यता है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये थोड़ी अनाड़ी मान्यता है। ये चित्रकारों के बनाए हुए चित्र नहीं है, ये ऋषियों के द्वारा बनाए हुए चित्र है। और ऋषियों ने ये चित्र अपनी अनुभूतियों से प्रदान किए, कल्पना से नहीं प्रदान किए। एक है कल्पना कल्पित चित्र, एक अनुभूति के चित्र, ये अलग बात है। अभी ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं बतलाता आपको। गीता प्रेस के दूसरे जो मुख्य रहे संस्थापक, कल्याण के आदि संपादक नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। अब ये हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को नित्य लीलालीन कहा जाता है। क्यों? वो ध्यान में बैठते, ध्यान में भी नहीं बैठते, उनकी आंखें भी खुली रहती, उनको भगवान की नित्य लीलाओं के दर्शन होते। ऐसे उनको भगवान की भक्ति करते करते ऐसे सिद्धि हो गई। तो वो क्या करते थे, उनको लीलाएं दिखती रहती थी। तो भारत के जो बहुत उस समय के बड़े बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे, वो सब उनके पास आकर बैठते थे। एक का नाम था भगवान, एक का नाम था जगन्नाथ, एक का नाम था, अलग अलग ऐसे कई चित्रकार, वो उनके पास आकर बैठा करते थे। और भाई जी जो देख रहे होते थे वो बोलते थे शब्दों से और उनसे बनवाते थे। फिर उनके बनवाने में जो फर्क होता था वो बोलते थे ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं ऐसा बनाओ। और वो जब सबसे नजदीक पहुंच जाता था उनकी अनुभूति के, तब बोलते थे ठीक।
तो ये बात तो अभी की बतला रहा हूं मैं आपको, 20-50 साल पुरानी, जो आदिकाल से चले आ रहे वो बात दूसरी है। और ऐसा ना होता तो भगवान के चित्रों में बहुत अंतर मिलता, आपको बहुत अंतर नहीं मिलेगा। जो आप कृष्ण के स्वरूप देखते हैं, राम जी के स्वरूप देखते हैं, शिव के स्वरूप देखते हैं, आपको बेसिक अंतर नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? उन ऋषियों की अनुभूति एक जैसी है। बाद में उसकी कल्पना के आधार पर जो चित्रकार लोग करते हैं वो दूसरी बात, लेकिन आदि आदि समय से वो चित्र वैसे ही है, वो मूर्तियां वैसे ही है। हमको 5000 साल पुरानी मूर्तियां मिलती है, 4000 साल पुरानी मूर्तियां मिलती है, वो गणेश जी की सूंड ऐसे ही मिलती है जी। किसी में गणेश जी की सूंड के बिना गणेश जी मिले हो ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिलती। तो ये जो बातें हैं ये अनुभूति की बातें हैं, उसको कल्पना मान लेना ये हमारी अज्ञानता की बात। धन्यवाद, थैंक यू। यस डॉक्टर विलास जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. Nice to meet you, sir, today. Actually, very nice presentation and interpretation delivered by the Rupal ji, Shukla ji. Today, I have nothing the question, but so many question creating in my day-to-day life, in my mind. Suppose I can't control myself, my anger, not feeling the happy. I have the expectation towards the other people's, and they are supposed to not good behavior about me, their perception not good about me. So I have the question about, now the question is that हिंदी में ये वैराग्य अवस्था है या नैराश्य अवस्था है? I am not supposed to interpreting myself. ये नैराश्य की अवस्था है। जब तक देखो मैं उसका परिणाम आपको बताता हूं। मैं इसकी बात बताता हूँ। जब मुझे दुख हो रहा है, जब मुझे असंतोष हो रहा है, तो ये नैराश्य है। जब मुझे प्रसन्नता हो रही है, जब मुझे आनंद है, जब मुझे संतोष है, तो वैराग्य की अवस्था है। दोनों में बिल्कुल सिंपल बात, दोनों का फीलिंग एक जैसा है, दोनों में रुचि नहीं रहती, दोनों में ज्यादा मिलने का मन नहीं होता, दोनों में संसार से विरक्ति का भाव आता है। नैराश्य में उसके परिणाम स्वरूप दुख होता है, खालीपन लगता है, थोड़ा उद्वेग होता है, उपेक्षा की अवस्था होती है। तो ये सारी जो अवस्थाएं है ये नैराश्य की है। वैराग्य होगा तो प्रसन्नता होगी, मन में संतोष होगा, आनंद की अनुभूति होगी। ये बात वैराग्य की है। और उसमें जो आपने बीच में बात कही ना कि मेरी अपेक्षा होती है कि दूसरों को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इफ आई एम एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, इट इज नॉट अ वैराग्य। वैराग्य स्टार्ट ही मैं संसार का त्याग करता हूँ इससे नहीं होता, मैं संसार से अपनी अपेक्षाओं का त्याग करता हूँ, इससे वैराग्य का स्टार्टिंग। हम कोई संत लोग भोजन नहीं करते क्या? गाड़ी में नहीं बैठते क्या? कोई सांसारिक सुविधाओं का उपयोग नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। सांसारिक सुविधाओं का उपयोग करने की मनाही नहीं है वैराग्य के लिए। वैराग्य की बात ऐसी है कि वो नहीं मिले तो मेरे मन में विक्षेप आता है। नहीं मिलने से जो विक्षेप आता है वो वैराग्य अवस्था नहीं, और नहीं मिलने पर विक्षेप नहीं आवे, आप वैराग्य में आ गए। सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करने से कोई हम उससे राग द्वेष में नहीं बनते, राग द्वेष बनते उसके नहीं मिलने से, जो मुझे वो चाहिए ऐसा लगता है, तो या वो नहीं मिला तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जो चाहिए, ये फीलिंग आता है। दिस इज चिपकाव, ये आ सकती है, और ये नहीं होना वैराग्य। Today life, how to maintain the happiness index? It means remedies. What is the remedies? Remedies on this stage. रेमेडी ये है कि how to mitigate it. संसार से वैराग्य तभी आता है जब, देखो ये मन है ना, ये खाली नहीं रह सकता। इस मन को रस चाहिए, और वैराग्य में रस की अप्राप्ति नहीं होती। वैराग्य तब होता है जब मुझे बड़ा रस मिल जाता है। जैसे हम जब बालक थे, छोटे बालक थे, व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, तो हमको टॉयज बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन अच्छा, उस समय क्या होता था, हम छोटे छोटे कोई 1-2 रुपए का टॉय होता था, उसके लिए जान देने को तैयार होते थे। तो कई बार हमारे बड़े नाराज हो जाते थे कि कैसे पागल हो, इतने छोटे से टॉय के लिए इतना झगड़ा कर रहे हो, इतना आंसू बहा दिए, तुम्हारे आंसू कितने कीमती है, ये टॉय तो 2 रुपए का भी नहीं है। लेकिन उस समय तो हमको 2 रुपए का टॉय ही सब कुछ लगता था। लेकिन समय आने पर हमको किसी ने कहा नहीं उस टॉय से खेलना छोड़ दो, अपने आप ही छूट गया। क्यों? हमको बड़े टॉयज मिल गए, हमको कुछ बड़ी चीजें मिल गई। जब बड़ा मिलता है तो छोटा अपने आप छूट जाता है। इसी प्रकार जब भगवान मिलते हैं तो संसार अपने आप छूट जाता है। भगवान की जब तक मिलना नहीं होगा ना, भगवान में रस नहीं आएगा, तब तक संसार का रस छूटता नहीं। संसार का रस छूटने के लिए कंडीशन ये है
कि हमको भगवान में रस आना शुरू हो जाए, भगवान की कथाओं में रस आए, भगवान की पूजा में रस आए, भगवान की अर्चना में रस आए, कीर्तन में रस आए, नाम जप में रस आए। जब मुझे किसी भी साधन में रस आने लग जाएगा, संसार से अपने आप ही उपरति हो जाती है। हमको छोड़ना नहीं पड़ता है संसार। संसार को छोड़ने का जो प्रयास है, ये तो बड़ी आरंभिक प्रक्रिया है, इसमें ज्यादा कुछ उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो तभी होती है जब भगवान में रस आने लगता है। तो ये रस बड़ा रस मिलने लग गया, छोटा रस अपना ही छूट। बड़े सरोवर के मिलने से छोटे सरोवर का प्रयोजन नहीं रहता, गीता में भगवान ने कहा। तो जैसे बड़े सरोवर मिलने में छोटे का प्रयोजन नहीं। किसी के घर में कुआं खुद का हो तो सरकारी पाइपलाइन के लिए लाइन लगा के थोड़ी खड़ा हो। यस, ये स्टडी में, ये अभ्यास में इतना रस बहुत पहले से रस है। फ्रॉम द बिगिनिंग, छोटे था तब से वारकरी संप्रदाय से कनेक्टेड हूँ। तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि अभी कुछ पाने की इच्छा हम नहीं रखते भगवान के पास, लेकिन नॉलेज में कितने भी घंटे तक स्टडी कर सकते हैं। अभी भी 10-10, 15-15 घंटे जो प्रोफेसर हो, लेक्चर हो, इसलिए अभ्यास तो करना ही पड़ता है। स्टडी की जो रस वाली बात है ना आपके, ये भी सांसारिक रस है। हाँ, वो तो है। यस यस, प्रोफेशनल। ये जो रस है, ये आध्यात्मिक रस नहीं हुआ। राइट। ये संसार में अच्छा वाला रस हो गया, सतोगुणी हो गया। हाँ, लेकिन सतोगुणी होने पर भी ये है तो सांसारिक ही। हाँ, बरोबर है ना। हाँ, तो परमात्मा की अनुभूति के लिए तो वो सत्वगुण से भी ऊपर जाना। हाँ, तो ये सांसारिक जो रस है ना, तो इससे वो थोडा मतलब मराठी में बोलते हैं कंटाळा आला इकडे। आता असं वाटतं की भगवद्गीतेचा आणि तिकडेच कुठेतरी अभ्यास करावा। म्हणजे आश्रम दिसतात, नैसर्गिक वातावरण दिसतं आणि फक्त अभ्यास आणि आसुभया सारखे चेहरे दिसतात की त्यांच्या सोबत राहिलं पाहिजे, सततम योगी। यही बात सच्ची है। ये हम तो वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ से रिटायर हो जाएंगे और वहां ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत अच्छा। तो शिविर में आना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, 8 दिन, 4 दिन, 2 दिन, व्हाटएवर। ऋषिकेश में है शिविर, आप उसका फॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे मुझे पता नहीं। चलो मुझे थोड़ा किसी कार्यकर्ता को पूछिए तो आपको फिर शिविर का फॉर्म मिल जाएगा, वो भरकर आप भेजिए। तो करेंगे। यस, 2 से 9 अगस्त है, तो तुरंत भेज देना चाहिए कि वो फॉर्म पूरे हो गए लगभग। पढ़ाने का सब्जेक्ट भी मैनेजमेंट साइंस है, इसलिए भगवत गीता का तो बहुत हेल्प पहले से होता है। जब आई एम स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, so student are very listening the very carefully our thoughts which is received from you, suppose. Very nice. परमार्थ आणि प्रपंच बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है। चलो, नैराश्य तो है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वैराग्य की स्थिति है तो भी अच्छा है। आपको चैट में आपके नंबर भेज दिया है, उस पर संपर्क करके आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं ऋषिकेश शिविर। Yes. I will Zoom chat देख लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। Yes. सरजीत जी, थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर अशोक जी। जय श्री कृष्ण। मैं भी पार्टली आपने मेरा आंसर दिया है, बट अगेन आई विल आस्क। वो मेरा काफी टाइम का क्वेश्चन है। जैसे आप मैनिफेस्टेड फॉर्म, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म कृष्ण गॉड का, then in my respect I have prayed for Shiva, Kali, Durga. So I will ask the same question, maybe you can answer again for me, like the images or the photo we pray. I just want to know, like maybe more clearly, if you say like from where the images came and we respectfully pray them. So please explain for me. ऋषियों ने ध्यान में भगवानों के दर्शन किए, और केवल ध्यान में की ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे महात्माओं को तो प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन होते हैं। रामकृष्ण परमहंस को काली जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, प्रत्यक्ष, जैसे मैं और आप बात करें वैसे। और ऐसे दर्शन करने पर अब उनकी अनुभूति में जो काली माता है वो वैसी है जैसी उनकी स्वरूप। तो ऐसे ही ऋषियों को, महात्माओं को, संतों को भगवान अपने प्रत्यक्ष स्वरूप के दर्शन देते हैं, देवता अपने प्रत्यक्ष स्वरूप के दर्शन देते हैं। अभी मैंने जिन भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार का जिक्र किया आपको, उनको रात में स्वप्न आया कि अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि आपको मिलने आएंगे, और उन्होंने आसन लगा के रखे। प्रत्यक्ष रूप से वो उनसे मिलने आए, प्रत्यक्ष, स्वप्न में नहीं। जागृत अवस्था में उन्होंने उनके लिए आसन लगा के रखे, और अंगिरा ऋषि और नारद जी ये भाई जी से मिलने आए, ऐसा वर्णन है। तो ये महापुरुषों के, संतों के साथ होने वाली घटनाएं। अब कोई कहे कि ये तो कल्पित बात है, तो भाई आपकी भावना है।
हम तो भाई जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो उनके जो विशारद लोग हैं, उनके जो विद्वान लोग हैं, उनके जो एकदम स्कॉलर्स है, हम उनकी बात को बिलीव ही तो करते हैं। हमको थोड़ी पता है कि 2 गुणे 2 4 क्यों होता है। हमने कभी पता लगाया क्या? We just believe it because they said. The scholar, those fields, the best scholars of those fields are believing that. So we are just simply believing that 2 is equal to 2 is equal to 4. We are not knowing the background of it. Do we? We are not. So there are so many things we don't know. We are just believing because the best scholars of their field have specified that. Similarly, when we go to the spiritualism, we have to believe their specialists, the best scholars of this field. So all the rishis, all the saints have believed the same. And that's why आप काली जी का जब भी चित्र देखते हैं, वो वैसे ही चित्र दिखता है ना, जब जवान बाहर है और गले में निर्मुंड की माला है। किसी ने दूसरा क्यों नहीं बना दिया? कल्पना ही होती तो बहुत सारे बन जाते। अभी ये चित्रकार कल्पना करते तो बना देते ना, गणेश जी को गिटार लेके बना देते। अभी गणेश जी को गिटार लेके चित्र, ये किसी संत का बनाया हुआ चित्र तो नहीं है ना, ये चित्रकार का। तो ये कल्पना से बना सकता है, बात ध्यान में पड़ती है आपके। लेकिन आप किसी संत महापुरुष के द्वारा कभी गणेश जी को गिटार लिया हुआ चित्र बनाया क्या कोई ऐसा ऑब्सीन चित्र बनाया क्या? तो ये कल्पना में और अनुभूति का ही अंतर आता है। तो जो टेम्पल में हम लोग देखते हो लॉर्ड शिवा या काली गॉडेस, वी मींस अंडरस्टैंड दैट इट इज बाय सम मुनि ऋषि विद देयर मे बी फिजिकल दर्शन। उसी का महात्म्य होता है। आप सोचिए, मंदिर में भी किसी मंदिर का महात्म्य ज्यादा क्यों होता है? जिस मूर्ति की प्रतिस्थापना किसी सिद्ध ऋषि से हुई होती है, उसी मंदिर का महात्म्य होता है। तो बड़ा स्ट्रक्चर बनाने से मंदिर का महात्म्य नहीं है। हम लोग देखते हैं बड़े छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी भी बड़ी मान्यता। क्यों? किसी ऋषि ने, सिद्ध मुनि ने, किसी सिद्ध व्यक्ति ने उस मूर्ति की स्थापना की। ध्यान में बात। So we will believe and go with that only, not any argument. Yeah, we should. We don't have power to argue ना। आप किससे आर्ग्यू करोगे? हाँ, आप केमिस्ट्री वाले से आर्ग्यू करोगे ये फार्मूला क्यों बना है, H2O क्यों है? Okay, thank you very much. शीला जी। नमस्कार सर, जय श्री कृष्ण। सर, अभी आपने जो बोल दिया ना कि ऋषि या संत लोग कि जब परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं तो उनके सामने कुछ परमात्मा की आकृति आती है। तो अलग अलग ऋषियों के सामने या अलग अलग संतों के सामने परमात्मा की अलग अलग आकृति देखते हैं क्या? कहाँ देखते हैं? इसीलिए तो एक जैसे स्वरूप दिखता है। कहाँ अलग अलग दिखता है? आपको कब अलग दिखा? शिव जी का स्वरूप एक ही दिखता है ना, शिवलिंग एक ही जैसे दिखता है। कहाँ अलग दिखता है? राम जी का स्वरूप एक ही जैसे दिखता है, कृष्ण का स्वरूप एक ही जैसे दिखता है। कहाँ अलग अलग दिखता है? इसकी जो श्रद्धा होगी उसका अरे चित्र। ये श्रद्धा वद्धा की बात आपके लिए है, ऋषियों के लिए नहीं है। ये ऋषियों के लिए नहीं। जो जिन संतों की, महापुरुषों की बात हम कर रहे हैं, जिनको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, जिसको भगवत साक्षात्कार बोलते हैं, वो उनके वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। मैंने अपने आप से वो एक रूप होते हैं और उनको विश्व दर्शन होता है या परमात्मा का दर्शन होता है। वो अपने आप से एक रूप होने वाली प्रक्रिया ज्ञान योग की है, वो भक्ति योग की नहीं है। हम यहाँ पर डिस्कस करें भक्ति योग, जहाँ पर परमात्मा का एक प्रत्यक्ष स्वरूप हमको दिखता है, वो दूसरी बात है। और अहम ब्रह्मास्मि, अपने आत्मस्वरूप में लीन होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में लीन हो जाना, ये ज्ञान मार्ग होगी। अच्छा, ध्यान में, ये दोनों बातें अलग अलग। ओके, धन्यवाद। इंदिरा जी। Thank you, Ashubhaya. Your delivery. I have a mental conflict. I have started to believe in Advaita philosophy of Shankaracharya, Nirguna Brahma and Saguna Brahma. Okay. When I think of the formless consciousness and try to concentrate or meditate on Nirguna Brahma of after reading particularly Ashtavakra Geeta. Now the concept of bringing a revered deity in my meditation, it creates little imbalance in my meditational practices. Can you just help me little out here? I believe in both.
before adopting Yeah, to. we all believe in both only. It is a primary level student who believes in one. Like you are mentioning Adi Shankaracharya Bhagwan. Who was he? The Nirguna Bhakta or Saguna Bhakta? Can you He tell was me? basically Nirguna Bhakta, but he has not condemned Saguna. He has not condemned. He wrote Krishnastakam. Yeah. He wrote Durgastakam. He wrote Exactly. Gangastakam. How can you say he didn't condemn? No, he didn't prayed. condemn, I said. Yeah. He prayed. He didn't condemn is not a enough sentence. He prayed. Yeah. He did Sagur Sagara Bhakti. See, for following this path of Nirguna Nirakar, ultimately you have to take the final stage of Bhakti. When you are on the Bhakti Marg is not dependent on Gyan Marg or Karma Marg. But Karma Yoga and Gyan Yoga, it is dependent on the Bhakti Yoga. Without the Bhakti, the final stage never appears. I am not telling that. It is told by so many saints in so many forms. I agree, sir. And that is why we should not fight among these. We all, like me also, as you are telling about you, it is same about me. I am also Sagur Sakar believer and I am also Nirgun Nirakar believer. And I also pray with both ways. When I try to meditate, I try to meditate in Nirgun Nirakar form also. But sometimes I love to meditate in Sagur Sakar form. When I like to see my Paramatma in some figure, I love to meditate in Sagur Sakar. That pleases me. But sometimes I like to be like Sankalpa Vikalpa Rahit. I want to be thought-free. That is a Nirgun Nirakar way of bhakti. Yeah, if I am doing Anapan Dhyan, if I am doing any, like I'll just listen to my heartbeat. And my heartbeat will resemble like Ram, 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 Ram. Now it is another form, not Sagun, neither Nirgun. You are getting me? So we all have these stages of the life. On one stage, we like one thing, on another is another. And it is the beauty of the spiritualism because we cannot have one type of food in our life. Can have. So how can our mind can be satisfied with one way only? So trying the different ways and following different ways, it's satisfied. It gives us rasa. इससे रस मिलता है, उसके बिना काम होता नहीं। ध्यान में, तो आप उससे झगड़ो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तब होगा जब आप झगड़ेंगे। जस्ट एक्सेप्ट इन वट एवर सिचुएशन यू आर। अभी आपको सगुण सागर का अच्छा लग रहा है ना, गो विद दैट। अभी आपको निर्गुण निराकार का अच्छा लग रहा है, गो विद दैट। बी नेचुरल विद बोथ द वेज, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम जब तक झगड़ते हैं कि मैं निर्गुण निराकारी हूँ, सगुण साकारी हूँ, तब तक बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक बात बोलिए, मॉर्निंग द time when I meditate, my meditation time, a particular time, particular space, all those things are specified. Okay, I should go with my Nirguna Brahma style or with my revered deity Saguna जिसमें Brahma? मेरा मन लगता हो, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस विधि से मैं संसार से कट जाऊं। जुड़ू किस विधि से महत्वपूर्ण नहीं है, कटू किस विधि से महत्वपूर्ण है। तो जहां से मुझे संसार से कटने में ज्यादा महत्व मिलता है, जिस विधि से मुझे संसार के ख्याल कम आते हैं, वो करो। भगवान ने कहा 12वें दिन, क्लेशो दिक्कतस्ते शाम अव्यक्ता सत्यचित साम। क्यों कहा? देहवद निर्वाप्यते। वी ऑल आर हैविंग दिस, हम देहाभिमानी है, हमको ये शरीर का ख्याल छूटता ही नहीं। अब शरीर का ख्याल छूटे बिना 11वें मार्ग में जाओगे कैसे? सबसे बड़ा मुश्किल वही खड़ा होता है। तो इसलिए हमारी जब जो स्थिति हो, उस स्थिति से जो मुझे सूट करता है वो करना चाहिए। इसमें कोई सही गलत नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, कम अच्छा ज्यादा अच्छा भी नहीं है। इस समय मुझे कौन सी बात सूट कर रही है, वो बात मेरे लिए सबसे अच्छी है। Thank you. We have now moved to the end of the question and answer session. Special thanks and gratitude to Ashu Bhaiya for giving very elaborate explanation to every question and making it very interesting. Also, thanks to Rupal Didi for the very interesting interpretation session. I would be failing if I don't thank the technical team who are working in the background relentlessly for the success of the session. Winding up with the final prarthana, I invite another child prodigy, Aradhya Pramod Bhindeji from Goa,
who's 9 years old and who attained the title of Geeta Vrati in May 2022. Over to you. Jai Shri Krishna. Yogesham Satchidanandam Vasudevam Rajapriyam Dharma Samsthapakam Veeram Krishnam Vande Jagadgurum Krishnam Vande Jagadgurum Krishnam Vande Jagadgurum. Jai Shri Krishna. Thank you so much, Aradhya ji, for the beautiful recitation. I really hope this session takes each of us forward in the spiritual path. Till we meet you in another enlightening session next week. Jai Shri Krishna. आदरणीय माता एवं पिता सस्नेह जय श्री कृष्ण। गीता परिवार द्वारा आयोजित अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की बाल एवं किशोरी विकास समिति तथा विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ के सहयोग से आयोजित ई संस्कार वाटिका 2022 में आपका सहर्ष स्वागत है। आपके बच्चों को 21 जून से 30 जून की कालावधि में इस ई संस्कार वाटिका के प्रांगण में अवश्य भेजें। बच्चे ही भारत की उज्जवल भविष्य की आधारशिला है और उनका संस्कार सिंचन हम सबका दायित्व है। इसी दायित्व के निर्वाह हेतु गीता परिवार ने बड़े ही महत्वपूर्ण उपक्रमों का समावेश इस संस्कार वाटिका में किया है। सौभाग्यशाली होंगे वे बच्चे जो परम श्रद्धेय राष्ट्र संत स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन हनुमान जी की कथा सुनेंगे, जो बच्चों में शक्ति एवं भक्ति बढ़ाएगी, उनके मन, बुद्धि और शरीर को संस्कारित करेगी। हनुमान जी की शौर्य के साथ साथ संस्कार वर्धन करने वाली भारतीय शूरवीरों की कहानियां बच्चों को सुनाई जाएंगी, जो बड़ी ही प्रेरणास्पद एवं रोचक होंगी। कथा कथन वह माध्यम है जो बच्चों के मन पर सीधा एवं गहरा प्रभाव डालता है और उनके चरित्र निर्माण में सहायक होता है। गीता परिवार के पंच सूत्रों का एक आधार है भगवद गीता। भगवद गीता एक जादुई पुस्तक है। जीवन का जादू इस सत्र में भगवद गीता के श्लोकों का विवेचन बाल सुलभ तरीके से किया जाएगा तथा कुछ मजेदार मैजिक्स बच्चों को दिखाए जाएंगे। भगवद गीता में प्रतिपादित दैवी गुणों का संवर्धन बाल मनों में करना यह गीता परिवार का उद्देश्य है। सहज शब्दों से एवं सटीक उदाहरणों द्वारा सफल जीवन के अनेक सूत्रों से बच्चे परिचित होंगे। हम प्रतिवर्ष बच्चों को स्तोत्र सिखाते हैं, वैसे ही इस वर्ष भी श्री कृष्णाष्टकम सिखाया जाएगा। संस्कृत भाषा का पारस्पर्श वाणी को संस्कारित बनाता है। इसके अभ्यास से उच्चारण शुद्ध होते हैं। आप देखेंगे कि केवल 10 दिनों में ही बच्चों को सभी श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे। हमारे बच्चों को भारत देश की गौरवशाली परंपरा का ज्ञान हो, इस उदात्त हेतु से विश्व गुरु भारत सत्र में प्रकाश डाला जाएगा। अद्भुत प्रेजेंटेशन द्वारा बताई गई ये कहानियां बच्चों के लिए बड़ी ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणास्पद रहेगी। योग सोपान। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आरंभ हो रहे इस उपक्रम में रोज 2 आसनों का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाएगा। बच्चे योगासन बड़े ही मनोयोग से करेंगे और आसानी से सीख भी जाएंगे। बच्चों को प्रत्यक्ष कृति करने में बड़ा आनंद आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मनोरंजक सत्र में क्राफ्ट एवं अन्य रोचक कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे फूलों का तोरण, फूलों की रंगोली, आरती की थाल सजाना, बॉक्सेस बनाना इत्यादि। इस सत्र से बच्चों की सृजनशीलता का विकास होगा। संस्कार वाटिका में प्रार्थना एवं गीत का समावेश भी है, जो बच्चों को भगवत भक्ति और देशभक्ति की राह पर चलने हेतु प्रेरित करेंगे। इस 10 दिनों में नित्य प्रश्न मंजूषा होगी एवं योगासन, क्राफ्ट, स्तोत्र की स्पर्धाएं भी होंगी। ढेर सारे पारितोषिक और सर्टिफिकेट्स बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। यह उपक्रम निःशुल्क है, बिल्कुल विनामूल्य, किंतु इससे प्राप्त होने वाले संस्कार अमूल्य है। आप तुरंत e-sanskar-vatika.com पर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाकर
ई संस्कार वाटिका का ऐप डाउनलोड करवाए और इस उपक्रम में आपके बच्चे का सहभाग निश्चित करें। जय श्री कृष्ण।